Hello friends, myself Dr. Sajid Ansari, cardiologist from टेडीपुलिया लखनऊ। आज हम ब्लड प्रेशर से रिलेटेड और इसे कॉम्प्लिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ द ब्लड प्रेशर, हाउ टू मेजर द ब्लड प्रेशर, व्हाट द इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटेनिंग द ब्लड प्रेशर एंड व्हाट द इम्पोर्टेंट एंड रिलेवेंट कॉम्प्लिकेशन। First how to define the blood pressure is important. What is the blood pressure? Blood pressure is just pressure exerted on the lateral column of blood vessels. This is the blood pressure, and this is usually variable on the every moment, every second and every day of the life. यूजुअली पेशेंट इज़ कमिंग टू आवर क्लिनिक एंड कंप्लेनिंग, डॉक्टर साहब अभी तो मैंने बीपी देखा था, वहाँ पे ये था, अब इतना हो गया. सो वी नीड टू explain the patient that this is the nature of blood pressure. Just we are measuring the lateral column pressure exerted on the blood vessels. So once need to classify patient if our patient is in normotensive or hypertensive. There is a different type of classification. Important was JNC Joint National Conference and latest is JNC 8. And this classifies at the optimal, upper normal and then normal and then grade 1 and grade 2. फॉर पेशेंट प्रॉस्पेक्टिव मरीज़ को क्या जानना चाहिए कि सामान्य ब्लड प्रेशर क्या है. अगर जो किसी को कोमॉर्बिडिटी नहीं है, कोमॉर्बिडिटी मतलब किसी को और कोई बीमारी नहीं है, लाइक शुगर, ब्लड प्रेशर के साथ किडनी प्रॉब्लम, इस्केमिक हार्ट डिजीज यानी कि हार्ट के एंजाइना की समस्या, तो उसका बीपी दिस शुड बी यूजुअली अराउंड 130 to 80 to 85. This is optimal. But someone is having this comorbidity. Suppose one patient of the blood pressure having kidney problem, so need to tight control of the blood pressure, and this target is little bit on the lower side. So this should be optimized by the doctors. But for patient perspective, there should be a range, and this maintaining around 130 to 80 to 85. Now coming to if you have some complication and some cardiovascular problem, then how to deal? This depends what is your need. Coming to classification and how to classify, this is latest in 2020 International Society of Hypertension just classify, and they make some epidemiological data, and if you capture some, I just am making it simplify it. In 3, 1 patient is hypertensive. If you will 3 to 4 people, around 25 to 30% people are hypertensive. So out of 3 people, one is a hypertensive. So if the burden of blood pressure is so much, then International Society of Hypertension just to classify blood pressure broadly in 2 categories. One is in essential group, where you optimize and customize the treatment according to patient need, and that is the highly on the specialized center and what is requirement of the patient. Other is necessary treatment. Every patient of blood pressure need to treat the blood pressure because this is a global and pandemic problem. Every 3rd and 4th patient is hypertensive. So issue arises if suppose we are working in some remote places and we are having some limited resources. So this doesn't mean we should leave the patient. We should treat the patient whatever resources we are available at our clinic, at our center, at our government setup, or at our even for the GP level. So you need to treatment the patient. Everyone, no need to leave the patient as a hypertensive. Now coming to how to manage the blood pressure. Important one initial is lifestyle modification. And lifestyle modification कहना तो एक शब्द आसान है, लेकिन इसको समझना ज़रूरी है और इसको अडाप्ट करना ज़रूरी है. इम्प्लीमेंटेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट. सो वन इज़ कॉलिंग डाइट ईटिंग हैबिट, डाइटरी अडॉप्शन टू stop the hypertension. So you start with your physical activity and exercise. Usual recommendation is at least 150 minutes in a week you should go for exercise. It means 5 to 6 days in a week, at least 30 minutes of the per day, with fast brisk walking and swinging movement of the arm. Now coming to your dietary habit, usually this need to reduce the sodium content. Not recommended to stop the sodium, just to reduce the sodium content of your diet, and if needed for some patient daily recommendation you increase the potassium content. But on the same time, if you are increasing the potassium content and patient having some kidney problem, so this is not advisable because in kidney problem potassium level is high. So this should be discretion of doctor what is your requirement.
Now coming to a healthy lifestyle, avoid your fatty diet. I mean this is easy for everyone. हम चाहे गांव में रहते हो शहर में रहते हो, हम तला भुना कम खाएं, अपने खाने में जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हों उसमें ये ज़रूर है कि हम ग्रीन लीफी वेजिटेबल फ्रूट्स जो भी संभव हो सके उसको खाएं. ये हर जगह अवेलेबल है. नॉट जस्ट गोइंग ऑन दिस एक्सपेंसिव मेथड फॉर dietary adaptation, whatever you have, just to avoid fat. And fourth one is this, I mean our lifestyle a very important concern for the blood pressure. In the current scenario, you know what type of lifestyle we are going to live in our community and how we are passing our life, especially in this pandemic situation of the COVID. Every patient is anxious and how to save their life. Even if someone is COVID not, our lifestyle is very hectic. Our sympathetic system is very active. Always we are active. So lifestyle modification is important. Adopting yoga and exercise, just meditation is important. And you know, one is the important issue regarding blood pressure in the childhood. This is a very important. Childhood obesity and hypertension. This is different subject, and there is a lot of paper, especially in Indian scenario also, because of taking junk food and pizza, especially in the school child, there is gross obesity. And majority of people is coming the hypertensive. There is one study, 3M study, May measurement month, and I was a part of this study. And you know, when this BP was measured in the school and even at clinic also, so many obese people, and especially from the child, they are coming and they are hypertensive. So this was just little bit about the general introduction. And now coming to a specific problem. And what is the importance of lifestyle modification? At least you should know. If you adopting all the method of lifestyle modification, usually you are gaining reduction of systolic blood pressure around 10 mmHg and diastolic around 5 to 6 mmHg. So suppose that at time of diagnosis by home blood pressure measurement, by official blood pressure measurement and by ambulatory blood pressure measurement, ये अलग अलग तरीके के हैं, सबकी अलग अलग कट ऑफ वैल्यू होती है, लेकिन एक जो रफ फिगर दिया था वो हमेशा ध्यान में रहे 130/80 to 85. अगर जो आप डायग्नोज हो गए कि हाँ आप हाइपरटेंसिव हैं, एंड एट टाइम ऑफ डायग्नोसिस इफ़ योर बीपी इज़ वेरी हाई, सपोज दैट इट इज़ 180/100, so along with the lifestyle modification you cannot become normotensive without this pharmacological intervention, without consulting doctor and without treatment. But at the time of diagnosis, if you are grade 1 hypertensive, suppose that your systolic is 150 and diastolic is around 90, you don't have any other comorbidity. So this type of patient, the right patient just to go for the lifestyle modification, and in coming to 6 to 8 weeks, there is more and more possibility that your BP will be coming down. So patient should be know कि अगर जो किसी की BP बहुत ज़्यादा है तो उस वक्त बस लाइफ स्टाइल पे स्टक ना रहे, लाइफ स्टाइल को रखते हुए अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें कि इसके लिए क्या प्रॉपर दवा हो सकती हैं. दूसरी, जब हम कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ की बात करते हैं तो ब्लड प्रेशर, इफ़ यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ब्लड प्रेशर अफेक्ट आवर ब्रेन. You know, paralysis and cerebrovascular accident a very common problem. Patient coming with increased blood pressure and suddenly get paralyzed. Coming to eye, because of patient develop sudden blurring of vision and hemorrhage in this retina. Known complication, people usually coming. Very common is patient coming to pulmonary edema, सांस फूलने लगती है और देखा गया तो बीपी बहुत ज़्यादा था. हिस्ट्री लेने पता लगता था कि पता नहीं, हमको तो नहीं पता है, पता भी था, दवाई नहीं खाते थे, हम ठीक रहते थे. सो ये नॉन कॉम्प्लिकेशन है. उसके बाद आती है किडनी की बारी, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि अगर जो किडनी डैमेज होने लगी तो फिर शायद उसको रिवर्ट करना मुश्किल होता है, नेफ्रॉन्स को रीजनरेट करना मुश्किल होता है. हमारे टीचर हमको बताया करते थे कि ब्लड प्रेशर के मरीज़ में अगर जो सिनेरियो ये मिले कि आपका हार्ट बड़ा होने लगे और किडनी छोटी होने लगे, यानी कि कार्डियोमेगाली, हाइपरटेंसिव हार्ट डिजीज़ के बारे में जब आप देखेंगे तो जब प्रेशर बढ़ता रहता है, प्रेशर बढ़ता है तो सेप्टम थिक होने लगता है और कार्डियोमेगाली हो जाती है, यानी हार्ट की साइज़ बढ़ जाती है, मसल मास बढ़ जाता है. तो मोटा मोटी सब ने कहा जाता है कि हार्ट बड़ा होने लगता है और किडनी श्रिंक करने लगती है. एंड दिस अ डेडली डुओ कॉम्बिनेशन, बैड कॉम्बिनेशन, हैविंग अ वेरी पुअर प्रोग्नोसिस. तो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के बारे में पेशेंट को जानना कि बीपी इज़ द साइलेंट किलर. 200/110 पे आप ठीक चल रहे हैं,
हो सकता है कि एक ऐसा स्टेज आए कि उस पर नसें फटें आपको सीवीए हो, आँखों में हेमरेज हो, सांस फूलने लगे, किडनी पे असर आने लगे। तो इसलिए सही वक्त से ब्लड प्रेशर को सही कंट्रोल करना आवश्यक है। अब बात आती है कई बार कि दवाओं के बारे में क्या किया जाए। जब दवा को चूज़ करते हैं तो बिलीव मी, यूजुअली इन आवर सिनेरियो एंड सो मैनी टाइम दिस ड्रग इज डिस्पेंस्ड बाय दिस I mean medical store people and non-competent people. So which drug is necessary for which group of patients is a very important one. जैसे हमारे पास कई सारे ग्रुप की दवाइयाँ यूजुअली यूज मेडिसिन इज़ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, ARB, बीटा ब्लॉकर, डायरेटिक, ये फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग्स हैं। होता क्या है कि जब तक आपके पास उपयुक्त नॉलेज ना हो, कई बार होता है कि पेशेंट ब्रेडिकार्डिया में होता है, हार्ट रेट कम होता है और किसी मेडिकल स्टोर से बीटा ब्लॉकर लेके खा रहा होता है, उसका और हार्ट रेट कम होता जाएगा। तो इसलिए जब ये लगे कि नहीं, हमारे ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए हमें डॉक्टर की ज़रूरत ही है, तो आप अपने एरिया में नियरेस्ट फिजिशियन को आप कंसल्ट करें कि आपके लिए क्या बेहतर दवा है। और दूसरी बात ये है कि अगर एक बार ब्लड प्रेशर आपकी डायग्नोसिस इस्टेब्लिश हो जाए तो कुछ चीज़ें हैं जिनको देखते रहना अति आवश्यक है। आप अपने आँख का चेक कराएं, जो कि बहुत ज़रूरी है। आप अपने हार्ट को दिखाते रहें कि उस पर ब्लड प्रेशर के चेंजेस तो नहीं आ रहे हैं। सिंपल ECG कराइए। किडनी को स्टेटस जानने के लिए आप यूरिनरी प्रोटीन करा के देख लीजिए, अगर जो उसमें वो बढ़ा हुआ है। क्रिएटिनिन वेरी सिंपल एंड चीप इन्वेस्टिगेशन। अगर जो इसमें एबनॉर्मेलिटी मिलती है, देन यू गो फॉर EGFR, यू गो फॉर द अल्ट्रासाउंड ऑफ किडनी एंड सी द किडनी साइज, इफ़ नीडेड गो फॉर द फर्दर इन्वेस्टिगेशन आल्सो। तो ब्लड प्रेशर के मरीजों को सामान्यतः अपनी आँखों की, अपने किडनी की और अपने हार्ट की देखभाल करते रहना आवश्यक है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ ये आशा करता हूँ कि हमारे जो भी साक्षरता कार्यक्रम में हमारे मरीज, हमारे सामान्य जन, हमारे मित्र मेरी बातों को सुन रहे हैं, ब्लड प्रेशर के रोकथाम, कंट्रोल एवं राइट ट्रीटमेंट पर ध्यान दें और अपनी लाइफ को हैप्पी लाइफ में कन्वर्ट करें। थैंक यू।